Good morning, students. In structural organization of animals, today we will learn about morphology of anatomy of cockroach. Okay, and we all about know cockroach, insect animal, which is found in our houses, in our atmosphere, surroundings. Okay. Then introduction. Cockroach are the most important insect, mostly found in our houses, railway stations, and everywhere. Actually, it's found in everywhere. Mostly it is found in dark places like नालियों में, सामान के नीचे, है ना, जहाँ पे डार्क प्लेसेस होते हैं, एंड स्पेशली वेयर इज़ मॉइस्चर इज़ फाउंड, है ना, तो यहाँ पर ये सभी जगह। एंड अगर आपको मालूम होगा, कॉकरोच जो है वो सबसे एंशियंट एनिमल कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि डायनासोर युग में भी कॉकरोच थे, बट उनका जो साइज एंड शेप था, according to dinosaur era, it is big and थोड़ा सा different. And we talk about in यहाँ पे हम अभी के बात करें तो in India two types of cockroach are found: Periplaneta americana and Blatta orientalis. Okay, and when we classified cockroach group, so systematic position of cockroach is kingdom Animalia, phylum Arthropoda. Arthropoda means जिसके पॉट्स, बहुत सारे पॉट्स हों, ज्वाइंट वाले, है ना, पॉट्स हो, उनको आर्थ्रोपोडा कहते हैं। और क्लास इंसेक्टा मीन्स ये इंसेक्ट में आते हैं, कीड़े मकोड़ों के अंतर्गत। एंड ऑर्डर जो है वो डिक्टाइपोटेरा एंड फैमिली ब्लैटिडे, जीनिस पेरिप्लेनेटा एंड स्पीसीज इज अमेरिकाना। And when we talk about its habitat and habit, cockroaches are found in warm, dark and damp places of kitchens, restaurants, railway stations, storehouse, godowns, ships and underground drainage. Okay, जहाँ पर भी नमी होता है, जहाँ पर अंधेरा होता है, ये जो है वो पाए जाते हैं। And cockroaches are nocturnal insect that prefer darkness and very active during night. ये हमको रात में ही ज़्यादा दिखाई देते हैं, दिन के समय ये हाइड होते हैं। And during daytime they remain hidden under some objects and take rest. Okay, and they are omnivorous. They feed on all kinds of food matter and even dead bodies of their follows. They are cursorial, run very fast and fly very rarely. कभी कभी ये फ्लाई भी करते हैं, इनके पंख होते हैं, है ना। कॉकरोचेस शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म and male and female sexes are found in different individuals. मेल और फीमेल जो है वो डिफरेंट होते हैं। and the body of cockroaches is dorsiventrally elongated, flattened and bilaterally symmetrical. Okay, तो ये डिफरेंट प्लेसेस में पाए जाते हैं, इसीलिए इन शायद ये डायनासोर युग से भी अपने आप को बचा पाने में सक्षम रहे हैं। and when we talk about exoskeletal, body is covered externally by hard brown chitinous plates called sclerites. आप लोग देखे होंगे कभी कॉकरोच मर जाता है तो उसका जो ऊपर बॉडी का ऊपर है वो क्रंची टाइप का, हार्ड टाइप का रहता है, वो काइटिन का बना हुआ होता है ना। एंड इट कंस्टिट्यूट एक्सोस्केलेटल
इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी के बाहर जो हार्ड कवरिंग होती है वो एक्सोस्केलेटल होता है, बॉडी के बाहर, एंड अगर अंदर है तो एंडोस्केलेटल. ओके, दीज स्केलेरिटीज आर ज्वाइंड टुगेदर बाय thin flexible soft articular or arthodial membrane. And the body of cockroach is divided into three regions: head, thorax and abdomen. Okay, so here the diagram of cockroach, we see it is head and two एंटीना लाइक स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं. अभी इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे. ये जो है वो कॉकरोच का बैक साइड से यानी पृष्ठ साइड यानी पीठ की तरफ से स्ट्रक्चर है. ये जो हम देख पा रहे हैं ये उसका ऊपर का कवरिंग होता है जो काइटिनस होता है, काइटिन का बना होता है, डार्क ब्राउन और रेडिश कलर का, या डिफरेंट कलर के भी कॉकरोच होते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज में मिलते हैं. एंड उसके नीचे जो है वो पंख जो है यहाँ पर छुपा हुआ होता है. सो इट इज़ कॉल्ड एंटीना एंड इट इज़ कंपाउंड आई. व्हाट इज़ कंपाउंड आई डिस्क्राइब, हम अभी आगे हम डिस्क्राइब करेंगे इसको. एंड इट इज़ सॉरी मेसोथोरैक्स, इट इज़ मेसोथोरैक्स एंड it is metathorax, and these are legs, and last segment is called 10th tergum, and then anal circus. ओके, तो ये हमने काकरोच का स्ट्रक्चर देखा, और अब हम इसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट के बारे में जानते हैं. When we talk about its head portion, it is the interior part of the body which is formed by the fusion of 6 segments. Okay, the proximal semi-circular border end of the head is directed upward, whereas distal end is narrow and mouth bearing. And this types of head is called hypognathous. And neck help the head to move in all possible directions. Okay, and head bears mouth parts, mouth and sense organs, and head is covered by sclerites. So sclerites in adult, all sclerites of the head fused to form a head corpus. Okay, ये पूरा जो है टुकड़े मिलकर क्या बनाते हैं, हेड कार्पस बनाते हैं. एंड द टॉप ऑफ हेड कैप्सूल इज कॉल्ड वर्टेक्स. एंड हियर एंड ओके, द वर्टेक्स इज डिवाइडेड बाय इन्वर्टेड वाई शेप्ड एंड epicranial structure into two epicranial plates, and a triangular plate is found in front of epicranial plates. It is called front. And frontoclapial structure is present of the callipes and a movable chitinous plates called present between labrium and clypeus. To check sclerites and genitalia lie vertically below the eyes at the lateral sides. And sense organs: compound eyes, antenna, and fenster or ocular spots are sense organ found on the heads. What is compound eye? Two kidney shaped black colored dorsolaterally placed compound eyes are present on the top of head. These eyes are formed by numerous visual elements called ommatidia.
it is externally represented by the same number of hexagonal area, and compound eyes are the organ of sight. ओके, कंपाउंड आइज मतलब यहाँ पे ये जो आइज है वो बहुत सारे आइस पीसेस से मिलके बना होता है, और ये एक साथ बहुत सारे चीज़ों को इसके द्वारा देखा जा सकता है। बहुत सारे डायग्राम जो है वो इस आइस में एक साथ बनते हैं। एंड एंटीना, अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना अराइज from antennal sockets present in front of compound eyes, and it is composed of many segments which are called promoters। यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे सेगमेंट से मिलकर ये बना है। एंड इट कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ओके, सभी तरफ ये डायरेक्शन में मुड़ सकते हैं चूँकि ये सेंस ऑर्गन्स हैं, और बाहर का जो भी सेंस है लाइक स्मेल, लाइट एंड डार्कनेस and other sense is catched by it, and each antenna possesses sensory bristle which are tactile in nature. Okay, and the cockroach can detect the presence of food and object in front with the help of antenna. Okay, and it also respond to smell. And third is are fenestry, a small rounded plate colored area called ocellus or fenestra is present towards the upper and inner side of each antenna। ये यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ना, दोनों तरफ के एंटीना में ये होता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट माउथ पार्ट्स, the appendages associated with the mouth are called mouth parts। Mouth lies on the lower part of the head। Mouth parts are used in searching and taking food। Okay, and mouth parts are biting and chewing type, and it consists of labrum, two mandibles, two maxillary, and labium and hypopharynx। And mouth lies at the base of the pre-oral cavity in the form of a narrow opening, and it is bounded by mouth parts, and it leads into the pharynx। Okay, and when we talk about thorax, the thorax consists of three parts, which anterior prethorax, middle mesothorax, and posterior metathorax। Each thoracic segment is enclosed by four chitinous skeletal sclerities, dorsal tertium and ventral sternum, and two lateral pleura, and the tertium of the prothorax is also called pronotum। Okay, and thoracic appendages, thorax bears three pairs of legs and two pairs of wings, जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा था thorax। and as we know about legs of cockroach, each segment of thorax bear a pair of legs, है ना, सभी इसमें pair of legs are present in their legs arise in between sterna and pleura, and the structure of leg is similar। Each leg is composed of five podometers, ये 5 segment में बटा हुआ होता है। and the upper part of the leg is called coxa, जैसे ये है upper part is called coxa, attached the leg of the thorax, and the other part of leg are thorahanter and the femur and tibia and tarsus। Okay, and wings, each cockroach has two pairs of wings। The first pair of wings, forewings and mesothoracic। यहाँ पर हम देख 2 pairs of wings होता है, 1 pair and 1, and इधर हाइड है एक। 2 pairs of wings are found in cockroach।
which are attached with the tergum of the mesothorax, and these are also called wing cover or tegmina और एलाइट्रा। ये जो बाहर ऊपर का हम देख पा रहे हैं ये कवर लाइक होता है, विंग कवर्स कहलाते हैं। एंड दीज आर डार्क स्टीफ ओपिक एंड लेथरी। ओके, एंड द सेकंड पेयर इज मेटाथोरैक्स, इट इज़ कॉल्ड हिंड विंग्स। ये इसके अंदर छुपा हुआ होता है, जब नॉर्मल पोजीशन में होता है कॉकरोच, उड़ने वाला नहीं रहता है, तब ये जो है इसके अंदर हाइड रहता है। सो इट इज़ called hind wings, and these are large, thin, membranous and transparent structure. Okay, and with broad terminal end, इसका जो टर्मिनल एंड काफ़ी ब्रॉड होता है, हल्का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। दे आर केप्ट फोल्डेड बिलो द टेगमिना एंड आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग। फ्लाइंग के लिए यही विंग्स जो है वो यूज़ होता है। एंड थोरेसिक स्पाइरिकल्स एंड 2 pairs of thoracic spiracles are present. The first pair is called mesothoracic. It lies in front of mesothorax between the bases of first and second pair of legs. And the second pair is called metathoracic, which lies in front of the metathorax between bases of second and third pairs of legs. And spiracles are meant for taking fresh air and release foul airs. Okay. सो आज आई थिंक हम इतना ही पढ़ेंगे, एंड एब्डोमेन के बारे में हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। सो गुड बाय एंड टेक केयर।